So now I will discuss some examples. So how to form a differential equation from a particular function or equation. Okay. So the question is, find the differential equation from the family of curve y square equal to 4ax. पहले मैं एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं. Find the differential equation from the family of curve y square equal to 4ax. Now why I'm using every time here family. See, y square equal to 4ax. इसका डायग्राम कैसा होगा? y square equal to 4ax means it is a right-handed parabola. We all know. So right-handed parabola कैसा होता है shape? This is right-handed parabola. Family means more than one curve draw करना होगा. बस this is called family of curve. X. वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. वर्टेक्स ओरिजिन में ही होगा. ओके, वर्टेक्स ओरिजिन में ही होगा. y square equal to 4ax means here the vertex is at what? Vertex is at origin. Vertex means it is the point of intersection of the curve and x axis. So ये curve और x axis का point of intersection कहाँ पे है? Origin में है. तो y square equal to 4ax का point of intersection को क्या बोलते हैं? Vertex. तो family मतलब क्या है? एक से ज्यादा कर्व ड्रॉ करना है, शेप सेम होगा. दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व. ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन? सी, कैसा था स्टेप्स? वो स्टेप्स मैं रब नहीं किया, देख लो, वही मैं फॉलो करूंगा. सपोज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा ए इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन कंटेन्स एक्स वाई एज वेल एज पैरामीटर ए. ओके, यू हैव टू कंसिडर दिस इज एज इक्वेशन 1 जो मैं यहां पे लिखा. इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा? देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. चलो इसको मैं अभी डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. व्हाई वी नीड टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स? बिकॉज द मीनिंग ऑफ और द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड derivative of dependent variable with respect to independent variable. So derivative of dependent with respect to independent means dy by dx. So that's why you have to differentiate this equation with respect to x. So differentiation of 2y square with respect to x is 2y into dy by dx. This is equal to differentiation of 4ax is 4a only because ddx of x is 1. यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या? y into dy by dx, this is equal to twice a, और a is equal to क्या लिख सकते हैं? y by 2 into dy by dx. Yes. So after differentiating with respect to x, what we have to do then? Then we have to eliminate the arbitrary constant to get the required differential equation. Eliminate करना है. देखो differentiation तो कर लिया, but still this arbitrary constant is there in this function. Yes. So to eliminate the arbitrary constant, I am arranging in this way. That means a का value find out किया. यहाँ पे arbitrary constant कौन सा है? a. तो मतलब a को eliminate करना है. a को eliminate करने के लिए a का value find out करो और जो वैल्यू मिला वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो. ऑटोमेटिक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी एलिमिनेटेड. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा कैसे एलिमिनेट करना चाहिए. यहाँ पे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अगर मोर देन 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो सपोज एक इक्वेशन में a b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? a और b का वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 जो मेन इक्वेशन है उसमें डाल दो तो a और b ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, so substitute the value of a in equation number 1. Therefore equation 1 implies y square is equal to 4 into y by 2 into dy by dx into x. Just you have to put the value of it. तो यहाँ से 4 cancel. So y square is equal to xy into dy by, sorry, this will be 2xy. Y square is equal to 2xy into dy by dx, which is the required differential equation. See now, is there any arbitrary constant? No, there is no arbitrary constant. Arbitrary constant मतलब a. यहाँ पे arbitrary constant है नहीं है. So which is the required differential equation? एक बार चेक कर सकते हो whether it is a differential equation or not. Yes, dy by dx है मतलब derivative of dependent variable with respect to independent variable है.
The function contains one independent variable, one dependent variable. So this is a differential equation. तो ये equation से कैसे differential equation construct करना है? This is an example. I will give one more example. Question है कि find the differential equation from a non-vertical line in a plane. Question यही है. Find the differential equation from a non-vertical line in a plane. If you don't know the equation or function, then how can we construct a differential equation? जैसे मैं यहाँ पे last example में y square equal to 4ax लिखा था, because we know the equation of the curve. But यहाँ पे मेरा second question है कि find the equation of a non-vertical line in a plane. Plane means Cartesian plane. So can you tell me the equation of a non-vertical line in a plane? The equation of non-vertical line in a plane is y is equal to mx plus c. This is the second example. Okay. Second question. The equation of a non-vertical line is y is equal to mx plus c. So from this equation, you have to construct a differential equation. So first of all, you check how many arbitrary constants are there. Two arbitrary constants, c and m. तो मतलब ये इक्वेशन को कितना बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? We differentiate the family of curve as many times as it has arbitrary constants. Since there are two arbitrary constants, means you have to differentiate two times. So let us differentiate first with respect to x. dy by dx is equal to m, because differentiation of c is 0. Differentiation of mx with respect to x is m. हो गया. But still here one arbitrary constant is there. That means one more time you have to differentiate it. So again, if we differentiate it, differentiation of the first order derivative, that means d by dx of dy by dx, which is equal to ddx of m. Now d by dx of first order derivative is the second order derivative, that is d square y by dx square, which is equal to 0, which is the required differential equation, because differentiation of m is a constant term which is 0. Okay, so this is the required differential equation. Here also see derivative of dependent variable with respect to independent variable, which is the most important part of a differential equation. ठीक है, if the differential equation does not contains derivative of dependent variable with respect to independent variable, we can't say it is a differential equation. So here d square y by dx square is there, which is second order derivative. चलो देखो, एक बात इंटरेस्टिंग बात है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए ऑर्डर 2 होगा, जो मैं लास्ट क्लास में बोला था. अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऑर्डर 3 होगा. ओके, सो हियर द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. ओके, सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल. इफ यू वांट देन आई विल गिव वन मोर एग्जांपल, बट सेम प्रोसीड्यूर है, बहुत आसान है. चलो और एक एग्जांपल दे देता हूं. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y x square plus y square equal to 2ax. x square plus y square is equal to 2ax. How many arbitrary constants is it? Only one arbitrary constant, that is a. So means it is confirmed that you have to differentiate this equation only once. So differentiate it with respect to x, twice x plus twice y into dy by dx, which is equal to 2a. तो यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो चलो a का वैल्यू मिल गया. क्या मिला? x प्लस y इंटू dy by dx. a का वैल्यू निकाल दिया. क्यों? बिकॉज यू हैव टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है, तो मेन इक्वेशन में पुट कर दो. सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x square plus y square, which is equal to 2 into x plus y into dy by dx into x. So x square plus y square 2x into x, that means 2x square plus 2xy into dy by dx. If you want to modify, you can write, so y square minus x square is equal to 2xy into dy by dx, which is the required differential equation. Check कर लो, यहाँ पे arbitrary constant है, no arbitrary constant, so it is the differential equation. So in this way we can form a differential equation from a family of curve
और यू कैन से इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स दे दिया मैं, थोड़ा सा प्रोसीड्यूर्स देखना है। आई विल अपलोड द नोट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर टुडे।